Hello dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter Advanced Web Designing. In last lecture, we have studied audio and video tags. Today we are going to see image mapping and inline frame. So let's begin. Today we are going to study image mapping, tags used in client-side image map, attributes of area tag, inline frame and attributes of iframe. So let us see one by one. Image map. What is image map? An image with multiple hyperlinks is called an image map. So what is this image map? It means that there will be one image which will be containing multiple hyperlinks. That is called as image map. What it means? ये बोल रहा है कि एक इमेज रहेगा और उस इमेज के ऊपर बहुत सारे हाइपरलिंक्स रहेंगे. उसे हम लोग बोलने वाले हैं इमेज मैप. लेकिन ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स मीन्स उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो एक नया वेब पेज ओपन होता है. दैट इज कॉल्ड एज हाइपरलिंक्स. ओके, तो एक इमेज रहेगा और उसके ऊपर बहुत सारे हाइपरलिंक्स रहेंगे. वो हाइपरलिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन होता है. Image map is used to connect links to different regions on web page. So what is this image map? Why we are using it? Why we are using image map? To connect links to different regions on a web page. Means एक web page रहेगा. आप जो web page देखते हैं वो web page और उसके ऊपर different regions रहेंगे. Okay, यानी जैसे अभी suppose for example this is my web page and these are the different regions. This is one region. This is one, this whole are the different regions and I am going to use these different regions for linking the files. Okay, means suppose I am using this region for linking my Facebook site, then I am using this region for linking Google website, then I am linking this region to open new HTML document. Okay, suppose I am using this three regions, 1, 2 and 3 regions. So these are the regions where we are going to link our file. Okay, so that is called as, that's why we are using image map to link to different regions on the web page. An image map is created by marking certain regions on an image which are clickable. These clickable regions are called as hotspot. So this, I told you this example, this was one region for me, this was one region and this was one region. यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक बना के रखा है कि हाँ ये रीजन पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरा फेसबुक साइट ओपन होना चाहिए, ये रीजन पे मैं क्लिक करूंगी तो गूगल साइट ओपन होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होना चाहिए? HTML document. So these regions are what? Clickable, means I can click on this region. Okay, so these regions, they will be called as what? Hotspot. What they are called? This clickable regions, this region and this region. These regions will be called as hotspot. Okay. Image maps are of two types. How many types of image maps are there? Two types. One is client side image map and the another one is server side image map. There are two types of image maps, client side and server side. But we are going to study client side image map. Okay. We are not going to see server side. We are going to see only client side image mapping. So let's see the tags used in client side image mapping. Tags used in client side image map. So there are different tags used in client side image map. So we are going to see one by one. First tag is IMG. What is IMG tag? For what purpose we are using this tag? We are using this tag to insert image on our web page. Okay, image insert करने के लिए हम लोग कौन सा tag का use करते हैं? IMG. Okay, so this tag is used
to insert an image on the web page. In client-side image map, useMap attribute is used with img tag. So, which attribute we are going to use with img tag? We are going to use attribute useMap. See, यहाँ पे मैंने source attribute का use नहीं बताया, लेकिन हमेशा source attribute compulsory है image के लिए. क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग इमेज का लोकेशन रखने वाले देने वाले. ओके, सो विच इमेज यू वांट टू इंसर्ट इन योर वेब पेज, दैट location or that path we are going to specify in SRC, that is source attribute of image. So I'm not going to tell about source here, we will directly see it in the coding, but the attributes which are new, which we are going to use in client side, that I am going to tell you. So here we are going to use useMap attribute with image tag. Image tag के साथ में हम लोग कौन सा attribute use करने वाले हैं? useMap. This useMap, this attribute is for client side, but for server side we are going to use isMap. हम लोग server side नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन बता के रखना अच्छी बात है कि useMap attribute is used for client side and isMap is used for server side. Okay. Then the useMap value starts with a hash symbol followed by the name of the map. So whenever you're writing this useMap attribute with image tag, then the value of this useMap will be what? यानी useMap is equal to क्या लिखने वाले वो बताया यहाँ पे. तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? useMap का हैश सिंबल. हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? useMap is equal to inverted comma hash. इन्वर्टेड कॉमा के बाद सबसे पहले क्या लिखने वाले हम लोग? हैश. हैश का ये जो सिंबल है ये लिखने वाले हैं, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मैप. अभी नेक्स्ट जो टैग हम लोग पढ़ने वाले वो मैप है, तो मैप का जो भी नाम रहेगा वो नाम सेम नाम यहाँ पे भी आना चाहिए. ओके, तो हैश के बाद हम लोग मैप का नाम लिखने वाले. ओके, कहाँ पे? यूज मैप में. useMap is used to create relationship between image and map. So what is the use of useMap? Why we are using this attribute? Because it is going to create relationship between whom? Between image and map. क्योंकि हम लोग एक तो useMap का यूज कर रहे हैं किस टैग के अंदर? इमेज टैग के अंदर, और उसमें वैल्यू किसका दे रहे हैं? मैप का, मीन्स मैप का नाम दे रहे हैं. तो दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है कौन? useMap. ओके, सो दोनों को मिलाने की कोशिश कौन कर रहा है? इमेज और मैप को मिलाने की कोशिश कौन कर रहा है यहाँ पे? useMap. Example, see how to write. Image src is equal to, this is a sunflower.jpg. Whichever image you are going to take, that path should be specified over here. The source attribute is compulsory attribute. So here we have not discussed about the source attribute, but the new attribute which we are going to use for client side is useMap. Here useMap is equal to inverted comma hash flower. मीन्स मैप फाइल का नाम क्या रहने वाला है? फ्लावर. वहां पे हम लोग हैश नहीं लिखेंगे, हैश तो हमको यूज मैप में ही लिखना है. ओके, लेकिन फ्लावर कहाँ से आया? फ्लावर, इट विल बी द नेम ऑफ द मैप फाइल. ओके, दिस ऑल पॉइंट्स आर ऑफ इमेज टैग. सो व्हाट इज द यूज ऑफ img? दिस img tag is used to insert image on web page. Secondly, we are going to use useMap attribute with image tag. And this useMap, it will be having the value hash and the name of the map file. Okay, and the use of useMap is for creating relationship between which file? Between image and map. Next tag is map. Now, what is this map? Map tag is used to create an image map. So see, when we are talking about this image map, means what we are going to do? We are going to create इमेज मैपिंग. इमेज के साथ हम लोग किसका मैपिंग करने वाले हैं? दूसरे फाइल्स का. यहाँ पे हम लोग हाइपरलिंक्स बनाने वाले हैं, यानी हम लोग मैपिंग करने वाले, वो इमेज के ऊपर हम लोग मैप्स क्रिएट करने वाले हैं. जिस रीजन पे, मीन्स ये रीजन पे क्लिक करोगे तो ये ऐसा होना चाहिए, उस रीजन पे क्लिक करोगे तो ऐसा होना चाहिए. सो टू क्रिएट दैट इमेज मैप, विच टैग इज यूज्ड फॉर दैट? टैग इज मैप. ओके,
It is linked to the image by using name attribute. So how we are linking this to the image? By using what? Name attribute. मैप के लिए जो नाम दोगे वो नाम हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, इसलिए हम लोग उस तरह से इमेज और मैप को लिंक करते हैं. The name attribute must have the same name of the image use map attribute. मैंने अभी बोला आपको ये नाम और मैप का नाम सेम रहना चाहिए. यहाँ पे मैंने फ्लावर लिखा है तो मैप फाइल का भी नाम कौन सा रहना चाहिए? फिर फ्लावर ही रहना चाहिए. Map is a container or paired tag. Means map is a container or paired tag means what? Means it is going to have the closing tag also. Okay. IMG is a singular tag. यहाँ पे closing tag नहीं होता है. ओके बट मैप टैग में हमेशा क्लोजिंग टैग रहेगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? कंटेनर और पेयर्ड टैग. लेट अस सी द एग्जांपल हाउ टू राइट द मैप टैग. सी दिस इज द एग्जांपल. आई एम गोइंग टू राइट मैप नेम इज इक्वल टू फ्लावर. तो ये फ्लावर, ये नाम और ये नाम हमेशा सेम रहना चाहिए. अब मेरे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे फ्लावर लिखा था, इसलिए मेरे मैप का नाम भी क्या है? फ्लावर है. आप जो भी लिखोगे ये नाम और ये नाम हमेशा मैच करना चाहिए. Next tag is area tag. Okay, now why we are using this area tag, that we are going to see. A clickable area is defined by using area tag. So मैंने अभी जैसे कहा था कि यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे एक रीजन है, तो ये जो क्लिकेबल एरियाज हम लोग बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं, वो हम लोग किसका यूज करके करने वाले हैं? एरिया टैग का यूज करके. ओके, सो द क्लिकेबल एरियाज that we are going to create by using area tag. Area tag is placed within map tag. Area tag को किसके अंदर प्लेस करते हैं हम लोग? मैप टैग के अंदर. मीन्स पहले मैप का नाम लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर हम लोग एरिया टैग लिखने वाले हैं. ओके, मैप टैग कैन कंटेन मल्टीपल एरिया टैग्स. सो एक मैप टैग के अंदर बहुत सारे एरिया टैग्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंट रीजन्स बना सकते हैं. जैसे अभी मैंने 1, 2, 3 रीजन्स बोले थे, तो कितने एरियाज आएंगे मेरे मैप टैग के अंदर? 3 एरियाज. 1 for this, 1 for this and 1 for this. So likewise we can create multiple area tags within the map tags. Area tag is a singular or empty tag. So area tag is a singular or empty tag. So what is the meaning of this? Means area tag, it is not having the closing tag. Okay, that's why it is called a singular or empty tag. Now let us see the example. See, this is the way how to write the area tag within the map tag. Okay, so map का नाम लिखा है यहाँ पे, फिर उसके अंदर हम लोग को जितने भी एरिया चाहिए वो टैग्स हम लोग लिखेंगे, फिर मैप को क्लोज कर देने का. ओके, अब ये एरिया के एट्रीब्यूट जो है वो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज हाउ टू राइट. Okay, only the example it is shown how to write. First you will write image, then you are going to write map, and then you are going to write the area. Okay, so I hope this all 3 tags are clear to you. So these 3 tags we are going to use for client side image mapping. Okay, now next we are going to see attributes of area tag. Of area tag. These are the different attributes of area tag. First is href. Href means hypertext reference. Here you are going to write which value? URL value. Means it defines the URL to which the clickable region within the image map navigates. What is the meaning of this? See, on the image you are going to select different regions. Okay, different regions where you are going to click and one new file should get open. Okay, यानी आप लोग इमेज लोगे और इमेज के ऊपर आप लोग डिफरेंट रीजन्स लेने वाले हो. जिस रीजन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको एक नया फाइल ओपन होना चाहिए. सो जो लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइल ओपन होना चाहिए, कौन सा फाइल ओपन होना चाहिए? वो फाइल का पाथ हम लोग href में लिखने वाले हैं. ओके, सो आफ्टर क्लिकिंग which file should get open, that location or that file's path we are going to write where? In href. Okay, means कौन सा फाइल ओपन होना चाहिए क्लिक करने के बाद, that we are going to write where? In href. Next attribute is shape. There are different shapes. Rect, this stands for what? Rectangle.
circle, circle, poly, polygonal. Default means if you're not going to give this three shapes, then it is going to take default shape, that is the entire image. Okay, then rect, it is defining the rectangular region. What is the use of rect? It is going to define the rectangular region. Means जो भी region आप select करने वाले हो link के लिए, so that time if you are going to write the shape as rect, then in that area rectangular shape is going to come. Then if you are giving the shape as circle, then that area, in that area which region is going to come? Circular region is going to come. Okay, then poly, this is going to define the polygonal region. Defines default, it is going to define the entire region. अगर कोई भी नहीं है तो पूरा image. Okay, so actually here you are going to come to know what is this actually. Okay, so when you will do the coding, that time you will come to know how it works. Next attribute is chords. What is chords? This is nothing but coordinates. Okay, see the spelling, you should write the spelling in this way only, otherwise it will create problem. Okay, COORDS, this spelling you have to write. Then for rectangular or for rect shape, how many coordinates are required? 4 coordinates. Okay, how many coordinates? 4 coordinates. Then for circle, you are going to write 3 coordinates. For poly, coordinates of each point. Polygonal के लिए कौन सा भी शेप का पॉलीगॉनल लोगे तो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे पॉलीगॉन के लिए उतने पूरे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने पड़ते हैं. ओके, देन डिफॉल्ट नो कोऑर्डिनेट्स बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेलेक्ट योर एंटायर इमेज, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा. Specifies coordinates of the clickable regions on the image map. So this is specifying the region, means whichever region you are going to use. Okay, means whichever shape you are going to use, depending upon that you have to set the coordinates. So this also we will see in the coding, how to set the coordinates for different shapes. Alt is the alternate text to the clickable region. So you know that you are always creating for image also, you are creating alternate text. Likewise for hyperlink also or for area tag also you are going to create what? Alternate text. Okay, means if this link is not going to get open, or if there is any problem, they are going to display you the alternate text whatever you write in the alt. Okay, this all are the attributes of area tag, and this will be clear to you only when you are going to see the coding. Otherwise it is going to create confusion in your mind. So wait till last, when you will see the coding, you will, all the ideas of these attributes will be clear to you. Now next we are going to see the new tag, that is iframe. Okay, inline frame. The iframe tag is used to create inline frame. So for creating inline frames, which tag we are going to use? We are going to use iframe. I come from this name inline and frame is as it is. Okay, so means this inline frames means what? You can place this inline frames anywhere on this web page. That is called as a inline frames. Okay, then an inline frame is used to embed another document within the current HTML document. What is the use of this inline frame? Why we are using this inline frame? Suppose you want to add another document to your current working document. Suppose I am writing coding for audio. Okay, I am writing coding for audio, and with that audio I also want another coding. I want to see the output of video also. ओके, सो मुझे एक फाइल के अंदर 2 अलग अलग फाइल्स का काम चाहिए, मेरा करंट डॉक्यूमेंट एंड अनदर डॉक्यूमेंट आल्सो आई वांट टू सी. सो दैट टाइम आई कैन यूज विच टैग? आई कैन यूज iframe tag. ओके, मीन्स यू आर गोइंग टू एम्बेड अनदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट डॉक्यूमेंट. करंट डॉक्यूमेंट के अंदर ही मुझे दूसरा कोई डॉक्यूमेंट का फाइल चाहिए तो मैं iframe का टैग यूज करूंगी. ओके, देन mostly inline frames are used for online advertising. So when we are going to, mostly you have seen this inline frames where in advertising, online advertising. See, whenever you are doing something, some work on the internet, so that time you might have seen that some ads come. Okay, online ad आते रहता है.
For example, like Mintra ad comes, then Agio, or any classes ads, or any food ads, means Swiggy and all that things. So all this ad comes on the internet when you're watching any thing on the YouTube, or you're watching the Facebooks also. So some small ads you're going to see in rectangular, or in some box. Okay, so they are nothing but they are the inline frames. So we are creating that online advertising using this inline frames only. iframe tag is a container or paired tag. So this iframe tag, it is a container or paired tag, means it is going to have the closing tag. Now example, how to write this iframe. See here, this is my current document where I am writing H1 heading, then I am using iframe, means here another document is going to get opened. Okay, with this current document I am going to open the another document as well. So this is the way how to write the iframe. Next we will see the attributes of iframe. Attributes of iframe tag. These are the attributes of iframe. First is src. Value is URL. It is used to give file name that should be loaded in the inline frame. So what is this src? src means it is a source. In this src, you are going to write location or the path of file which should get open in the frame. Okay, in the inline frame. जो inline frame के अंदर फाइल ओपन होना चाहिए, वो फाइल का पाथ हम लोग कहाँ पे लिखने वाले हैं? सोर्स एट्रीब्यूट में. कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? हमेशा सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर. ओके, देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज हाइट. Pixels specifies the height of an iframe. Suppose if you want to give height of the frame, then that you can do by using height attribute. Similarly, if you want to give the width of the frame, then that also you can give using which attribute? Width. Next is a name. Text specifies the name of an iframe. So whatever name you want to give for your iframe, that you can give using name attribute. src doc. Now what is this src doc? Source document. Okay, src doc is source document. Already we are using src. Then what is the use of this? See, here what we are going to write? We are going to write the file which should get open in the inline frame. जो फाइल इनलाइन फ्रेम के अंदर ओपन होना चाहिए उसका पाथ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. लेकिन अगर मुझे कोई फाइल ओपन होना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सेम जिस तरह से हम लोग HTML कोडिंग लिखते हैं वही कोड मुझे src डॉक में लिखना है. ओके, अगर मुझे फ्रेम के अंदर कोडिंग ही लिखना है, कोडिंग ही ओपन होना चाहिए, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, ये जो सब टैग हम लोग यूज करते हैं ना, अगर ये ही मुझे ओपन करना है, फिर से लिखना है, फ्रेम के लिए मुझे अलग से लिखना है टैग्स, तो दैट टाइम आई एम गोइंग टू राइट src doc, and in that src doc I am going to write HTML code. What is this HTML code? It specifies the HTML content of the page to show in the inline frame. Means whatever coding you are writing. For example, suppose I will write src doc is equal to inverted comma. Values में क्या लिखना है? Inverted comma के अंदर suppose I will write heading. So I will write h1, then I will write heading. I will close h1. Okay, so that what will the output of that coding? Whatever heading you have written. Suppose I have written inline frame. Okay, so inline frame heading, it is going to get displayed in the inline frame. Okay, तो इसका यूज क्या हुआ? इसका यूज ये है कि अगर मुझे कोई फाइल ओपन नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली कोई कोडिंग लिखना है, HTML का कोड लिखना है फ्रेम के अंदर, so that I can do using the src doc. So I think this attributes are clear to you. If not, then it will be clear to you when you will see the coding. So that's it for the attributes of iframe and about the image mapping. Now next we will see coding for both. Coding of image map. Okay, so see, here I have written body, h1 image mapping, image source.
सो फर्स्ट वी वांट टू टेक इमेज. ओके, पहले हमें इमेज का टैग लिखना है. यहाँ पे पहले हमको इमेज लेना है. जो भी इमेज आपको चाहिए वो इमेज का सोर्स या लोकेशन हमको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है. ओके, देन यू आर गोइंग टू राइट यूज मैप इज इक्वल टू हैश वर्क. व्हाट इज दिस हैश वर्क? हैश मीन्स व्हाट? This is the symbol which is used for connecting this image file with this map file. Okay, and the work, this is the name of this map. Okay, so you are going to write like this work and this work, this should be same. ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पे जो भी नाम रहेगा वो नाम और ये नाम हमेशा सेम रहना चाहिए. Alt is equal to workplace. This also alternate text instead of image. If alternate text should be displayed, then whatever the text is there, whatever text you want, you can write over here. Okay, then first I will show you how to paste the location of your image. Now I have copied one of the image on the desktop. See, this is my image. This I have copied on the desktop. Now I am going to copy this image location. How? ये image का location मुझे copy करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I am going to open this image with Mozilla Firefox. Now see, this is the image and this is the URL. Okay, means this is the location. So I am going to copy this location. Control C, and this location I am going to paste here in front of source. हो गया, ये मैंने पेस्ट कर दिया. तो सबसे पहले तो मुझे वो इमेज बंद करना है. ओके, आई विल क्लोज दिस इमेज नाउ. माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड. नाउ दिस इज द आउटपुट. एक्चुअली दिस आउटपुट इट हैज बीन शोइंग यू. ओके, तो ये हो गया इमेज. अब इस इमेज के ऊपर मुझे कुछ रीजन्स देने हैं, जिस रीजन्स को मैं क्लिक करने के बाद मेरा कोई फाइल ओपन होना चाहिए. मीन्स आई वॉन्ट टू हाइपरलिंक दैट इमेजेस. ओके, आई वॉन्ट टू गिव hyperlinks to that image locations. For example, see alternate text came there, workplace. See, now this is the image. Okay, अब ये image है. अब इस image के कुछ locations, कुछ regions मुझे ऐसे करने हैं जिसको मुझे hyperlink देना है. For example, now even if I'm pressing tab or anything, nothing is going to come. Okay, कुछ नहीं आ रहा है. बाद में जब हम एरिया मैप के फाइल के अंदर एरिया का जो भी टैग्स है वो लिखेंगे तो उसके बाद ये सब वर्क करने वाला है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये जो लैपटॉप दिख रहा है आपको, इस लैपटॉप को मैं एक रीजन लेने वाली हूँ. ओके, मीन्स दिस आई एम गोइंग टू सेलेक्ट वन रीजन, और इस रीजन को मैं कौन सा शेप देने वाली हूँ? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल शेप इस रीजन को देंगे हम लोग. फिर उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में मेरा एक फाइल ओपन होना चाहिए. उसी तरह से ये जो दिख रहा है आपको, इसके लिए भी मैं एक रीजन देने वाली हूँ. मीन्स आफ्टर सेलेक्टिंग दिस रीजन, वन फाइल शुड गेट ओपन. ओके, सो for this also, for this I'm going to give shape as circle. okay, फिर उसमें क्लिक करने के बाद में मेरा एक फाइल ओपन होगा. फिर for this also, for this mobile phone also I'm going to give this region as a clickable region. So when I'm clicking on this region, one file should get open. Okay, for this suppose I'm selecting here the shape as poly. Okay, polygonal shape. Then what will happen on clicking this region also, one file. तो इसे कहते हैं इमेज मैपिंग. मीन्स वी आर गोइंग टू टेक दिस इमेज, देन वी आर गोइंग टू मैप दिस इमेज विद द हाइपरलिंक. सो दैट इज कॉल्ड एज इमेज मैपिंग. ओके, सो एक रीजन ये आएगा, एक रीजन ये, और एक रीजन ये. सो दिस थ्री रीजन्स विल बी कॉल्ड एज, दिस three regions will be clickable regions, and this three clickable regions will be called as what? Hot spot. Okay, so this is image, and this is the, when we are going to create that mapping, that time will be called as image mapping. Now let's do mapping work. How we are going to do that? See, image तो ले लिया, अभी मुझे mapping में लिखना है. तो यहाँ पे एरिया मैंने 3 एरियाज लिए हैं. क्यों 3 एरियाज लिए? क्योंकि मुझे 3 रीजन्स चाहिए. सो फर्स्ट आई विल राइट शेप. First attribute I am writing shape for area. Here I am writing rect. You should write rect. Then chords. COORDS. Chords is equal to inverted comma. ये inverted comma में हम लोग coordinates लिखने वाले. कितने coordinates लिखने वाले rectangle के लिए? 4. कैसे 4 लेने वाले वो भी हम लोग देखने वाले. Okay. Similarly I am going to write href. Means जो फाइल ये
रेक्टेंगल को क्लिक करने के बाद ओपन होना चाहिए, वो फाइल हम लोग HRF में लिखने वाले हैं. ओके, सो सपोज मैं अभी फाइल का नाम लिख लेती हूँ http:// सो सपोज यहाँ पे फाइल ओपन होना चाहिए आपका फेसबुक. ओके, फेसबुक डॉट facebook.com. Okay, फिर afterwards I will give you alternate text also. Any text, what you can write either you can write rectangle or you can write Facebook. Anything will do. Okay, then similarly this thing I will copy and I will write for other two areas also. Control C, your Control V. Again here also I will write. I will just change the shape. Instead of rect, I will write here circle. I will change the link also. Suppose I am writing Google. Then alternate text also I will change. I will write Google. Then here I will write poly for polygon. Then I will change here, instead of website I will write one file name. Okay, HTML document. For example, in previous lecture we had did audio1.html, so that I will write over here. Then alternate text is audio. Okay, this much I will save the file. अभी कुछ नहीं होगा. Now first we have to write coordinates for this. Now very important, how to select the coordinates. अब ध्यान से देखना कि coordinates कैसे select करते वो देखने वाले हम लोग. तो सबसे पहले what I will do, see ये मेरा image था, इस image को मैं open कर image. Okay, open this image with paint. image को किससे open करना है आपको? paint से. Okay, this is paint. So now see कैसे करते हैं. फर्स्ट हम लोग रेक्टेंगल लेने वाले हैं. ओके, लैपटॉप को हम लोग रेक्टेंगल ले लेते हैं. सो अभी इसको रेक्टेंगल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. सो आपको दो ही कोऑर्डिनेट्स, चार कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. सो एक कोऑर्डिनेट में कितने रहते हैं, एक कोऑर्डिनेट में एक पेयर मीन्स एक्स और वाई, दूसरे कोऑर्डिनेट में दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एक्स और वाई. ओके, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 4. सो आपको दो पेयर्स लेने हैं, किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए. फॉर रेक्टेंगल यू आर गोइंग टू टेक 2 pairs. 2 pairs मेक्स हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स? 4 कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो वो कैसे? देखो, आइदर ये टॉप लोगे, सपोज ये वाला टॉप ले रहे हो तो इसके अपोजिट का लेने का. ओके, ये दो अपोजिट, ऑलवेज टेक द अपोजिट कोऑर्डिनेट्स, दिस कोऑर्डिनेट्स एंड दिस कोऑर्डिनेट्स, अदरवाइज दिस कोऑर्डिनेट्स और दिस कोऑर्डिनेट्स. ओके, मीन्स अपोजिट कोऑर्डिनेट्स ही लेने हैं आपको. ओके, नाउ सपोज कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं वो भी बता रहे हैं. वी विल ड्रॉ द लाइन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी शुड ड्रॉ, देन ओनली विल कम टू नो. तो हमें सपोज ये वाला चाहिए. सी इट शुड बी अप्रॉक्सीमेट, एकदम एक्यूरेट नहीं चाहिए. वी कैन टेक अप्रॉक्सीमेट. दिस इज एक्स एक्सिस, आई एम गोइंग टू टेक द कोऑर्डिनेट दिस कोऑर्डिनेट. सो मुझे और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. आई विल ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम हियर. ओके, सो ये कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे और मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट चाहिए. सो आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन ओवर हियर सो दैट इट विल बी easy for me to take the coordinates. Okay. Okay, so I'm going to take these two coordinates x and y and these two coordinates x and y. Either these two opposites or these two opposites will do. Okay, तो चलो हम लोग अभी यही लेके देखते हैं. Okay, तो कौन सा coordinates देखना है आपको? So you have to see here there will be two coordinates coming. Okay, वो आपको देखना है और उसी को note करना है. So see here which coordinates you can see? You can see 57, 83. 57, 83. So उसको हम लोग लिख लेते हैं
यहाँ पे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स 57, कॉमा 83, कॉमा go back. Now this you want to note. Okay, अब ये दोनों को नोट करना है. So ये दोनों को नोट करो. तो कौन सा है 547 704 दिख रहा है ना आपको. यहाँ पे देखो. हाँ, concentrate here when you are selecting this. See the coordinates over here. So see the coordinates. What are the coordinates? Approximate लेना है, एकदम accurate नहीं चाहिए हमको. अभी मेरा 550 आ रहा है. ओके 547 548 कॉमा 704 548 कॉमा 704. So I'll write 548 कॉमा 704. ओके सो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया. आई विल सेव दिस. सो यू वांट टू सी द आउटपुट नाउ. सिर्फ रेक्टेंगल के लिए देखना है. सो आई विल रिफ्रेश दिस फाइल. नाउ सी प्रेस टैब बटन. ओके टैब. ओ गया वो रेक्टेंगल आया था. दिखेगा क्या आपको पता नहीं मुझे. कैन यू सी योर डॉटेड लाइन. दिस लाइन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिख रहा है. वो हो गया आपका रेक्टेंगल शेप. नाउ दिस रीजन सी योर हैंड इज कमिंग. इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल था क्या था. मैंने क्या दिया था HRF में. आई थिंक फेसबुक दिया था. सो फेसबुक ओपन हो जाएगा. क्या ओपन होने वाला है. फेसबुक. सी यहाँ पे आ गया facebook.com. यानी वो फेसबुक का साइट ओपन करे. सी यो द फेसबुक साइट हैज बीन ओपन. सो आई विल जस्ट गो बैक. ओके सो दिस इज वन क्लिकेबल रीजन. दिस इज कॉल्ड एज अ हॉटस्पॉट. एक हमारा हो गया. अब हमें दूसरा करना है. सो नाउ वी विल मेक सर्कल कोऑर्डिनेट्स. वी विल सी सर्कल कोऑर्डिनेट्स. ओके चलो ये लाइन्स जो लिखा था निकाला था उसको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग को क्या चाहिए. सर्कल चाहिए. सर्कल के लिए चाहिए. तो यानी हम लोग इसको सर्कल के लेने वाले हैं. तो फिर से ये सर्कल के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स. सी यहाँ पे XY था. यहाँ पे XY 2 पेयर्स थे. 2 पेयर्स में मुझे 4 कोऑर्डिनेट्स मिले. अब सर्कल के लिए मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. क्यों 3 चाहिए. 4 क्यों नहीं चाहिए. सो सी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू टेक द सेंटर पॉइंट. सेंटर XY. ओके अब सपोज आप ये सर्कल ले रहे हो तो इसका फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं इसको सर्कल बना देती हूँ. ओके अप्रॉक्सीमेट लेना है आपको. सो सपोज इसको हम लोगों ने सर्कल बना दिया. जस्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ओके सो ये जो सर्कल लिया है ये सर्कल का सेंटर पॉइंट लेना है आपको. ओके सर्कल का सेंटर पॉइंट. तो सेंटर पॉइंट में X एंड Y एंड देन यू वांट टू टेक द रेडियस. ओके रेडियस कहाँ से रहता है. पॉइंट से लेके ये सर्कल तक. ओके सो दैट रेडियस वो कैसे लेते हैं वो भी हम लोग देखेंगे. सो सेंटर पॉइंट लेना है मुझे. तो मुझे फिर से लाइन ड्रॉ करके लेना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा इमेज का मार्किंग से लेगा. ओके सो सपोज इसका सेंटर पॉइंट अगर हमें दिख रहा है ऐसा. ओके अप्रॉक्सीमेट लेना है तो शायद थोड़ा सा okay so if you want you can move this line also. Approximate. Okay so like this. Then again I will draw the line inside from center. Approximate. So here now I want to take the coordinates of the center. Okay so center का coordinates यहाँ पे देखना है आपको. Okay so center के कौन से coordinates आ रहे हैं देखो. 662 603 अप्रॉक्सीमेट रहना चाहिए. थोड़ा सा सर्कल इधर उधर हो जाएगा वो. 662 602. ओके मेरा और आपका सेम ही रहेगा. ओके यू हैव टू नोट डाउन योर कोऑर्डिनेट्स. व्हाट वर द कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली. वंस अगेन आई हैव टू सी व्हाट वाज दैट. 660. ओके 660 603 660 603. so write your coordinate 660 comma 603. now one more is remaining that is radius. now how I will check the radius. see मुझे रेडियस लेना है तो क्या करना पड़ेगा. मुझे रेडियस के लिए मुझे सिर्फ सेंटर से यहाँ तक का लाइन चाहिए. ओके आई विल जस्ट रिमूव ऑल दिस.
जैसे सिर्फ यहाँ तक का, सॉरी, I'll draw one line over it. Okay, now see, this is my radius. I'm going to take radius. So I will just see the radius of this. ओके, सो माई रेडियस इज, रेडियस यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे नहीं देखोगे अभी, अभी ये वाला जो रहता है ना इंटू वन, वहाँ पे देखना है आपको. सो मेरा रेडियस कितना आ रहा है 114, एक ही पॉइंट आएगा, इंटू वन आ रहा है यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस रेडियस 114 कॉमा 114. ओके, सो आई विल सेव द फाइल. अभी इसका आउटपुट हम लोग लास्ट में देखेंगे पॉलीगॉन का करने के बाद. ओके, नाउ फॉर पॉलीगॉन क्या होता है, अब पॉलीगॉन ट्राइंगल भी रह सकता है. सी योर डिफरेंट पॉलीगॉन्स आर देयर, सो दिस कैन बी योर पॉलीगॉन, दिस इज योर पॉलीगॉन, दिस इज योर पॉलीगॉन. सो दिस ऑल आर द पॉलीगॉन्स. सो अभी हम लोग सपोज ये रीजन को सेलेक्ट करेंगे, तो इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे तो आपको, आप इसको पॉलीगॉन शेप दे रहे हो, इट इज़, यू विल से दैट इट इज़ ट्राइंगल, देन नॉट ट्राइंगल, सॉरी रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल भी आप शेप दे सकते हो. एक इमेज के अंदर सिर्फ 3 अलग अलग ही शेप्स रहनी चाहिए ऐसा नहीं है, हम लोग 2 सेम शेप्स भी रख सकते हैं. लेकिन एग्जाम में अगर आपको बोला कि 3 डिफरेंट शेप्स यूज़ करो, सो दैट टाइम यू शुड नो हाउ टू यूज़ द पॉलीगॉन. सो सपोज आई एम यूजिंग पॉलीगॉन फॉर दिस. नाउ सपोज मुझे ये पॉलीगॉन यूज़ करना है. ओके, so if I want to use this polygon, what I will do, I will just, अभी ये दोनों एक दूसरे के अंदर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फाइल का प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, वी विल नॉट सेलेक्ट दिस बिकॉज ये सर्कल के लिए भी आ रहा है, तो मुझे छोटा वाला ही पॉलीगॉन लेना है. ओके, सपोज आई एम सेलेक्टिंग दिस पॉलीगॉन. नाउ सी, मेरा सिलेक्शन पॉइंट्स डिफरेंट आएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ तक ही ले रही हूँ, सर्कल पे नहीं आ रहा है. नाउ सी इन पॉलीगॉन व्हाट यू वांट टू राइट, कितने कोऑर्डिनेट्स रहे वो कैसा पता चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीगॉन. नाउ सपोज दिस पॉलीगॉन शेप आई वांट फॉर दिस मोबाइल, then what will happen, how many points are there, see here in this polygon how many points are there, 1 2 3 4 and 5. so 5 points है तो 5 into 2 कितना आता है 10. तो कितने कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे हम लोग, 10 कोऑर्डिनेट्स. ये शेप है इसलिए 10 कोऑर्डिनेट्स. अब अगर सपोज ये शेप है, ये शेप है, तो इसमें कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है, तो कितने कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे, 4 into 2 8. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीगॉन यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स. सो दिस विल ऑल्सो डू, दिस विल ऑल्सो डू, एनीवन वॉट एवर यू वॉन्ट. ऐसा नहीं है कि मुझे यही रीजन सेलेक्ट करना है. इवन इफ यू वॉन्ट दिस रीजन टू बी सेलेक्टेड फॉर योर फाइल, देन यू कैन सेलेक्ट दिस रीजन ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मुझे मोबाइल फोन या किसी पिक के ऊपर ही क्लिक करना है. अभी दिस इज ऑल्सो अ फुल पिक ओनली, तो इसमें से कौन सा भी रीजन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं. अभी सपोज आपको ये रीजन नहीं चाहिए, आपको ये रीजन चाहिए, तो हम लोग ये रीजन सेलेक्ट करते हैं. ओके, तो इसको निकाल देते हैं. ओके, ये वाले रीजन को भी ये सेलेक्ट होगा, इसको निकाल देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, एक नई जगह पर रीजन पॉलीगॉन लेते हैं. so, ये रीजन यानी ये वाला रीजन अगर मैंने सेलेक्ट किया तो मुझे क्या आना चाहिए, मेरा HTML डॉक्यूमेंट लिखा था उसके लिए. नाउ वी विल राइट कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस 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 एंड दिस पॉइंट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इन वन डायरेक्शन ओनली. डायरेक्शन चेंज मत करो, एक ही डायरेक्शन में आप लिखो. So from here I'm starting. So see, note down the coordinates. It is 680, 97. So मुझे क्या लिखना है, 680, 97, comma. Again I will go back. I will note down the another coordinates. What are that coordinates? 615, 175. 615, 175. 615, 175. Again I will go. I will note down this coordinate 680, 244. 680, 244. 680, 244, comma. This coordinates 744, 173. 744, 173. 744, comma 175 लिख सकते हो अगर सेम लाइन में चाहिए तो. 173 लिखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा इसलिए. ओके, दिस इज ऑल. नाउ आई एम सेविंग द फाइल. ओके, तो देखो रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करोगे तो आपको फेसबुक ओपन होना चाहिए. सर्कल शेप पे क्लिक करोगे तो गूगल ओपन होना चाहिए. पॉलीगॉन शेप के लिए आप क्लिक करोगे तो कौन सा फाइल ओपन होना चाहिए, ऑडियो. इतना याद रखो क्योंकि हम लोग अभी आउटपुट देखने वाले. सेव द फाइल एंड सी द आउटपुट.
Now I will refresh this file. सी जब आउटपुट देखोगे एक बार आपको इमेज दिख रहा है तो अब बाद में आपको टैब दबाना है. नाउ क्लिक ऑन टैब. सी कैन यू सी हियर रेक्टेंगल. सी दिस इज द शेप, दिस इज द रीजन. Your rectangle is there. Now click on this region so your Facebook site gets open. Okay, then go back again. I will press tab button. Rectangle, circle is coming, so this region is for the circle. Now when I'm going to click on this region, which file should get open? Google का site open हो रहा है. Okay, so again go back, again press the tab button. Work from first only. Okay, this is polygon. Okay, so see, this is the polygon region. When I click on this, audio file gets open. See, audio file open हो गया. Okay, go back. So is it clear to you? यानी ये regions कौन से first is rectangle, this is the region, then circle and then polygon. Even you can select this mobile phone for clicking the region. Okay, so this is all about the image mapping. So all these things is clear. See, you have to write shape, you have to write the coordinates. Circle के coordinates कैसे लिखे पता चला? फर्स्ट सेंटर पॉइंट के एक्स एंड वाई एक्सिस लिखना है, फिर आपको रेडियस का सिलेक्शन करना है. फिर से एक बार बताओ कि रेडियस का सिलेक्शन कैसे करते हैं. सी, जो भी अप्रॉक्सीमेट लेना है, एकदम एग्जैक्ट आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है. अप्रॉक्सीमेट पॉइंट से आपको लाइन लेके, सेंटर लाइन से लेके आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. फिर ये जो भी रहेगा लाइन, इसका रेडियस आपको यहाँ पे दिखता है. ओके, यहाँ पे दिखेगा नीचे इंटू 1 करके रहेगा. सो सेलेक्ट दिस, तो आपको इंटू 1 पॉइंट दिखेगा. नाउ इट इज चेंजिंग माई आंसर. सो जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको बराबर वो पता चलेगा कि कैसा वर्क करता है. ओके, सो दिस इज हाउ यू वांट टू सेलेक्ट. और यहाँ पे तो आपको सब कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. उसी तरह से रेक्टेंगल के लिए भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज ऑल. सो यू वांट टू enclose this map file. You want to close this map file, sorry, and this area tag is placed within this map file. पहले आपको इमेज लिखना है, फिर मैप फाइल, मैप के अंदर आपको एरिया का टैग लिखना है. एंड दिस नेम, यूज मैप नेम एंड दिस मैप नेम शुड बी सेम. Okay, so this is all about the image mapping. Now next coding is inline frames. See, this is the coding for inline frames. Here iframe source, here also I am giving the audio1.html. you can write any another. मीन्स अभी क्या होने वाला है, ये भी आएगा आउटपुट में. ये बॉडी में हम लोग ने जो लिखा है h1 वेलकम टू इनलाइन फ्रेम्स, बिलो इज द इनलाइन फ्रेम, and with that again one box will be there, means that will be frame, and with that you can see this file. In that frame you are going to see this file. Height and width is given and name for the frame is given. First we will see this source, then we will see the source doc. Okay, now let us see the output of this file. See, this is the output. Okay, यहाँ पे वो heading था, आया पैराग्राफ आया, फिर this is the frame. See, this is the frame, और फ्रेम के अंदर कौन सा फाइल ओपन हो गया, ऑडियो में जो भी मैंने लिखा था वो फाइल के अंदर वो यहाँ पे ओपन हो गया. सो दिस इज अबाउट द इनलाइन फ्रेम. एंड आई फ्रेम सोर्स में जो फाइल का नाम लिखा वो आया. नाउ वी विल सी हाउ टू गिव सोर्स कोड, सोर्स डॉक, नॉट कोड, इट इज सोर्स डॉक. अभी सोर्स डॉक लिखना रहेगा तो क्या करते हैं, उन्होंने कहा था कि सोर्स डॉक में हम लोग क्या करते हैं, HTML के टैग्स लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आई एम राइटिंग H1, यू हैव टू राइट इन दिस फैशन, इनलाइन फ्रेम क्लोज H1. Okay, this is a tag. Now save this file and see the output. Okay, first I will close this file क्योंकि वो by default लेगा पहले का. I will close this file and close this one also, and I will show you the output once again. Inline frame. Okay, is it iframe? Open this file. See the output.
नाउ द आउटपुट हैज बीन चेंज, यानी हम लोग ने जो कोड लिखा था H1 इनलाइन फ्रेम वो यहाँ पे आ गया. ओके, मीन्स ये बॉडी के साथ हम लोग दूसरा डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ इनलाइन फ्रेम्स. हाउ यू see now how it is, how it works. So how it works, you came to know how inline frame works. यहाँ पे कोड देख सकते हैं, वो कुछ भी कोडिंग्स लिख सकते हैं HTML टैग पर यूजिंग src doc. अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप सोर्स दो और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जो भी फाइल आपको ओपन करना है उसका लोकेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द inline frames and image mapping. I hope this is clear to you. In the next lecture, we are going to study web hosting, and web hosting is only a theory topic. Okay, there are no coding is there. So see you there only. Till then, you practice all these things. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, take care, be safe and happy learning.